हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है मोस्ट आस्क्ड बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम 2000 प्लस एमसीक्यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के। ये बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज हैं, लेकिन हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार हम सिली मिस्टेक की वजह से इनको गलत कर देते हैं। तो आपको इन्हें मास्टर करना है। किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आप 5-5 मिनट की वीडियो है तो आप डबल की स्पीड से देख लें, तब भी 5-5 6-6 या 7-7 8-8 वीडियोज आप एक दिन में देखकर कवर कर सकते हैं। तो आते हैं, इससे पहले हम 12 वीडियोस कर चुके हैं। आज पार्ट 13 है इस सीरीज का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और जीरो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ diminishing marginal rate of substitution. The satisfaction which a consumer drives in the consumption of a commodity is equal to 320. The price of that commodity is 180. What will be his consumer surplus? तो जो consumer surplus होता है हमारा, हम जानते हैं कि वो टोटल यूटिलिटी और माइनस जो उसका जो प्राइसेस होता है क्या पे करता है। तो देखते हैं, 320 माइनस 180 will be 140. So right answer for this question will be 140. A consumer buys commodities X and Y. He would be in equilibrium when MUX upon PX, MUY upon PY, MUX upon MUY is equal to MUM, MUX upon PX, MUY upon PX, MUX PX upon PY, and MUM. So the right answer for this question is MUX upon PX and MUY upon PY. Next question is, the law of equimarginal utility is one of the laws within whose parameters marginal utility analysis is framed, and the other one is law of diminishing marginal utility, or law of proportions, law of consumer surplus, or law of increasing returns. So the right answer for this question is option A, that is law of diminishing marginal utility. When indifference curve is L-shaped, then two goods will be of which type? Complementary goods, substitute goods, perfect goods, perfect substitute goods, or perfect complementary goods. So the right answer for this question is perfect complementary good. Whenever the indifference curve will be of L-shaped, it will show the perfect complementary goods, PCG. So guys, we know that substitution goods are those goods which can be used in place of each other to satisfy the same need. अगर इसके एग्जांपल देखें हम तो टी एंड कॉफ़ी हो सकते हैं, या बटर एंड मार्गरेन हो सकता है, या फिर पेप्सी एंड कोक को देख सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड, when we talk about complementary goods, so complementary goods are those goods which are used to which are used together to satisfy a want. The use of one good increases the use of other. अगर इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो देख सकते हैं कि टी है या शुगर है, और कार के साथ पेट्रोल या पेन के साथ इंक। तो गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन cardinal analysis or ordinal analysis, both A and B, none of the above. So the indifference curve are based on the ordinal analysis. Sorry, ordinal analysis. Option B will be the correct. Cardinal approach is related to indifference curve, equimarginal utility, law of diminishing returns, none of the above. So the cardinal approach is based on equimarginal utility. The substitution effect of fall in price of the commodity will lead to upward movement in indifference curve, or downward movement in indifference curve, or movement from lower IC to higher one. So whenever there is a fall in price, it will cause a movement from lower indifference curve to a higher one due to the substitution effect. So option C will be the right answer. Next question is, marginal utility is a which concept? Cardinal, ordinal, both A and B, and none of the above. So the right answer for this question is cardinal. Indifference curves are convex to origin, concave, neither one or nor two, none of the above. So the right answer for this question is convex to the origin. ये कुछ क्वेश्चन बहुत इजी से थे। हम आगे कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप हमें बताएं कि आपका स्कोर ए वाला आ रहा है, दैट इज 8, या ए प्लस वाला आ रहा है, दैट इज 9, या ए प्लस प्लस आ रहा है 10। अगर किसी का भी स्कोर 8 से कम आ रहा है तो उसे अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है।